Hello students, welcome to RISE YouTube channel. I am Amit Karan Chaudhary. Today in our deep analysis, we are going to discuss about heatwave in India. Heatwave in India, in today's The Hindu newspaper, we can see the article in editorial page, Concrete Fever. The article is fully focused on heat waves. Okay, so this topic is very much important because in 2020, heat wave related questions, mains questions are there in our question paper. Okay, so this questions, the topic is very important, and in this video we will learn the context, why this topic is in the news, introductions, a ready-made introductions for mains answer writings, mains answers, understanding the heat wave crisis in India, core reasons for heat waves in India, रीजन क्या है, देन व्हाई हीट इज मोर लिथल इन इंडियन सिटीज को क्यों इम्पेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट से हम लोग किसको टारगेट करेंगे, विल हिट द अर्बन आइलैंड, हीट आइलैंड जो टॉपिक्स है, जो कि क्वेश्चन पे भी आया है. देन कोर इम्पैक्ट्स ऑफ हीट वेव्स एंड चैलेंजेस, व्हाट इज द चैलेंजेस टू रिस्पॉन्स हीट वेव्स, then way forward and conclusions are ready-made UPSC mains notes on these topics. Okay, then understanding the heat wave crisis in India. Then heat wave frequency, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स है, अगर इसको देखते पहले हम लिखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है. कॉन्टेक्स्ट अगर देखा जाए तो गंगानगर, जो कि राजस्थान के गंगानगर, वो क्या 48 डिग्री सेल्सियस दिस वीक को अचीव किया है. दिस हॉटेस्ट दैट इंडिया हैज बीन फील दिस ईयर सो फार, सबसे हॉटेस्ट है 48 डिग्री सेल्सियस का गंगानगर. दैट्स वाई द टॉपिक इज इन द न्यूज. बट there is some data fact. What are the data facts? Heat wave frequency has increased. Frequency means a phenomena which is happens or periods of time. So if the length of the time reduce, so the frequency will be increased. Frequency is increased. So heat wave frequency has increased 0.1 days per decade. एक डिकेड में 0.1 डेज करके इंक्रीज हो रहा है. कहाँ से हो रहा है, 1961 से इंडिया में हो रहा है. देन मैक्सिमम हीट वेव ड्यूरेशंस हैज इंक्रीज 0.55 डेज पर डिकेड. 0.1 डेज इज फ्रीक्वेंसी, मतलब अभी एक हीट वेव हुआ, देन कल एक हीट वेव होगा, तो ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ. पहले आज होता था, देन 7 दिन बाद हुआ, लेकिन नहीं, ये आज हुआ तो मान लीजिए 2 दिन बाद हो गया, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ. बट ड्यूरेशन इज, लेट्स सी कि आज हुआ लेकिन 1 घंटे के लिए हुआ, लेकिन अभी बोल रहा है कि वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब 1 घंटे से 2 घंटे हो रहा है, तो उसका जो रेट है वो 0.55 डेज पर डिकेड है. तो दिस इज इंफॉर्मेशन. फिर नेक्स्ट थिंग्स इज को रीजंस. व्हाट आर द रीजंस ऑफ हीट वेव्स इन इंडिया? यू ऑल नो दैट्स. व्हाट इज द रीजंस? Environmental is anticyclonic circulations. What is this? In central and northern parts of India, there is a high pressures of wind. But in the scorching of heats, what happens? The thing is, when clouds, there is no clouds, direct sun rays coming, then what happen? कि एयर हीट होके ऊपर जा रहा है, ऊपर से प्रेशर्स, एयर का प्रेशर नीचे आ रहा है. इससे क्या हो रहा है कि एंटी साइक्लोनिक जो सर्कुलेशन क्रिएट हो रहा है, उससे हीट वेव्स क्रिएट हो रहा है. देन एडवेक्शंस ऑफ हॉट ड्राई एयर. एडवेक्शंस क्या, जहाँ से पाकिस्तान के वेस्टर्न साइड से, पाकिस्तान वेस्टर्न जो एरिड रीजियंस है, वहाँ से क्या आ रहा है कि गर्म जो हवा है, तो हॉट एयर्स आर कमिंग टुवर्ड्स आवर नॉर्दर्न एंड मिड इंडिया. दैट इज द रीजंस ऑफ हीट वेव. And then urban heat island effects. We all know that this is a very important topic. Urban heat island effect. What is this? In urban areas, there is a, we usually say that this is a concrete jungle, and the effect of the concrete is they heat up so quickly, and there is no soil left in the cities. Maximum portions are covered with concretes. That's why the city's environments are becomes very hot, not due to only concrete but also with that ACs. We all know that ACs is self-generating. Okay, demands, I mean self-generating, generate demands. Okay, they generate their demands within their selves. How? When we run a AC, okay, so they produce heats and they left this outside our home,
okay, outside our buildings. So it's create heats in the environments, but cool in our insides our rooms. Okay, so these things create urban heat island crisis effects, and then severe deforestation and loss of moisture. So we all know that ski lots of deforestations are happen in the name of infrastructure development, in the curriculum of developments, industrializations. So these things are happens. And then global climate change and El Nino, we all know that term El Nino, La Nina. This is a very important terms in our geographies. So El Nino, basically El Nino, it's a air circulations. We'll explain it in later series. El Nino, when we talk about El Nino, we'll discuss about it. But in simple terms, what is impacts of El Nino and La Nina? El Nino impacts are negative in our country. La Nina is positive in our country. Okay, when there is a La Nina, there is a more rainfalls. But when is El Nino, there is a not a frequency, not दे क्या करता है कि एल निनो वो मानसून को बिगाड़ देता है, ठीक टाइम से नहीं होगा, कभी बहुत जल्दी हो जाएगा, कभी लेट हो कर देगा, प्रोलॉन्ग समर्स रहेगा, समर्स का ड्यूरेशन ज़्यादा रहेगा, गर्मी ज़्यादा रहेगा, विंटर होगा तो एक्सट्रीम विंटर होगा. तो दिस इज द थिंग्स ऑफ एल निनो. ओके, देन द नेक्स्ट थिंग्स इज व्हाई हीट इज मोर लिथल इन इंडियन सिटीज. What is the impacts on Indian cities, or why Indian cities are victims in this case? Okay, so the urban heat island effect, already discussed about it. Surging microclimate humidity or related to the concrete jungles. Okay, so there is little space, little bare soils in our urban area. Okay, so soils are covered with the concretes. So जब सॉइल्स होता है ना, तब सन्स रे आता है, तो उसमें क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली, जो कि एनवायरनमेंट को ह्यूमिड रखता है और हेल्थ ठीक रखता है. लेकिन जब कंक्रीट आ जाता है तो वो ह्यूमिडिटी लेवल मैच नहीं होता है. सो दिस थिंग्स क्रिएट अ माइक्रो क्लाइमेटिक ह्यूमिडिटी. ओके, then the air conditioning paradox, already discussed. Air conditions creates their own demands. They produce lot of heat in our environments. Okay, then high concentrations of vulnerable workers. What is the issues? Where we're in a AC rooms, discussing about the topics heat wave, heat wave in India. But the thing is, there is lots of workers. There are lots of workers are uh, in our country who are not covered with at least shades. Okay, they're working in under the sky. Okay, so this creates lots of problems. Sunstrokes. Okay, sunstroke. So high concentration of vulnerable workers. How many workers are in organized sector? So in unorganized sectors, mainly infrastructural or industrial laborers, they are all working on in the open environments. So there is no minimums of shades. Okay, so this is the issues in urban areas. Okay, then core impacts of heat wave. What is the core impacts? क्या क्या impacts heat waves का आ रहा है? ये this is a very if we generate it our own selves na, so it will help us in our answer writings. Okay, first things, health, agriculture, okay, economic output, these are the things. So start. Severe public health crisis, I already discussed about it. What is the things? Heat strokes. This is a very much as a popular terms in this days. Okay, then start economic productivity loss. Economic productivity loss होगा, क्योंकि जितना अभी दिन पे जितना पहले बिजनेस जो डेली मतलब जो बिजनेस ठेले पे लगाते हैं ये सब, फिर वर्क करना, तो अभी दिन में काम करना भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जा रहा है. जो मतलब स्पेशली जो लोग बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शंस वर्कर से, तो ये प्रॉब्लम्स हो रहा है. देन एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी रिस्क. ज़्यादा धूप होने से क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी कम, ज़्यादा गर्मी हो जाने से फसल का प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाता है. देन सेवियर पावर ग्रिड वाटर स्ट्रेस. पावर ग्रिड के प्रेशर्स पड़ रहा है, क्यों? एसी ज़्यादा चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, एसी कूलर फ्रीज ज़्यादा चल रहा है. देन एक्सर्वेशंस ऑफ अर्बन क्लाइमेट इनइक्वालिटी. अर्बन क्लाइमेट और अदर्स क्लाइमेट्स में, विलेज क्लाइमेट्स में बहुत अंतर हो रहा है. दिस क्रिएट्स अ डिफरेंसेस, which impacts on the health of
common man. Okay. Then challenges in current response of heat waves. हीट वेव्स को रिस्पॉन्स करने में क्या क्या चैलेंजेस आ रहा है, देखिए ना, ट्रीटिंग हीट एज ए एपिसोडिक डिजास्टर. अच्छा, इसको हम लोग डिजास्टर नहीं मान रहे, ठीक है. ओके, इसको मान रहे हैं कि एक फिनोमेना है, एक स्मॉल फिनोमेना है, जो कि कभी कभार आता है. तो इसको वी आर नॉट सीरियस अबाउट द हीट वेव इशू, बट दिस आर वेरी सीरियस इश्यूज. वाइड स्प्रेड नॉन इन्फोर्समेंट ऑफ लेबर लॉ. लेबर्स लॉ को हम लोग ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किए, जिसमें लेबर के सुरक्षा, सिक्योरिटीज ऑफ लेबर, सो नॉट कवर्ड. ओके, सो लेबर लॉज जो इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं हो पाया. फिशियस साइकिल ऑफ टेक्नोलॉजिकल फिक्सेस. तो वो जो टेक्नोलॉजिकल जो सॉल्यूशंस चाहिए था वो नहीं मिल रहा है. पैसा नहीं है तो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन नहीं, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन नहीं है तो प्रोडक्टिविटी नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है तो पैसा नहीं है. तो ये एक विशियस साइकिल चल रहा है. देन जो लेबर लॉस का मैटर ये है कि लेबर लॉस का तो वो जो लॉज है जहाँ पे 10 घंटा काम करा सकते, ये कर सकते, वो सब तो इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन जो लेबर के साइड से जो राइट्स थे वो अप्लाई ठीक से नहीं हो पाया. देन क्या क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, देखिए इसमें जाएंगे तो इसमें वे फॉरवर्ड्स मिलेगा, मैंने मार्क करके रखा हो. देन इन्फोर्स मैंडेटरी क्लाइमेट ड्रिवन लेबर फ्रेमवर्क. ओके, हम लोग को क्लाइमेट ड्रिवन लेबर फ्रेमवर्क्स बनाना चाहिए, किस समय पे काम करना चाहिए, इतना टेम्परेचर आ जाए तो लेबर को क्या सहूलियत मिलना चाहिए. दिस थिंग्स आर शुड बी इन कोड. ओके, देन डीकॉन्जेस्ट सिटीज विथ कूल रूफ्स एंड अर्बन फॉरेस्ट. कूल रूफ में मेजर लेवल एक्टिस रूफ तो होना चाहिए माथे के ऊपर, एंड देन अर्बन फॉरेस्ट्री पे हम लोग को जोड़ देना चाहिए. देन वी शुड फोकस ऑन डिप्लॉय टारगेट फिजिकल एलोकेशंस फॉर हीट एडप्टेशन. हीट एडप्टेशन के लिए हम लोग को वी शुड एलोकेट फंड्स फॉर हीट एडप्टेशंस. एंड देन ओवरऑल बिल्डिंग कोड्स बनाना चाहिए जो कि क्लाइमेट रिजाइलेंस हो. ओके, ग्रीन बिल्डिंग जिसका बारे में बात किया जा रहा है, गृह इनिशिएटिव. गवर्नमेंट इनिशिएटिव में क्या होगा, गृह इनिशिएटिव्स. दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. ओके, इंस्टीट्यूशनलाइज हीट एक्शन प्लान्स एज रेगुलर अर्बन. जो हम लोग को इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा जो हीट एक्शन प्लान्स के ऊपर, जो कि हम लोग को अर्बन एरिया में चाहिए. तो ये हीट वेव के ऊपर कैसे हीट को मैनेज किया जाए, मैंने एक तो पॉइंट बोला, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स. यू पीपल्स कमेंट्स, students comments, what are the government initiatives in this regard. Okay, at least 3 points, 3 government initiatives should be there. Okay, so comments at least 3 government initiatives, okay, in the comment sections. And then conclusion is a ready-made conclusion. India must transition from reactive emergency relief to structured urban resilience, integrating climate calibrated building codes, enforcing occupational heat thresholds, and securing dedicated fiscal budgeting are imperative to protect vulnerable populations and sustainable economic productivity. These are ready-made conclusions for our main answers. Okay, so we upload the contents in our websites. Please visit our websites, and there is a one thing, there is a 2020 PYQ. You read it and write down the answers within a 15 minutes time frames. Okay, no cheating, and submit it in our website, so we'll evaluate it. Okay, and after that you will or further informations you can visit our Rise websites and Rise YouTube channels for more details analysis and more details video analysis. Okay, so all the way students, thank you.